Hello learners, this is lecture 7 on the topic that is factor and transfer payments. Basically ये मेरी series basic concepts of macroeconomics का lecture 7 है. So those students and learners, those who have not seen the previous video, just see that so that you can link up with these video. So let us start. Basically, what is factor and transfer payment? Okay, what is transfer payment and why it is excluded from the calculation of national income, as well as it is also excluded while calculation of domestic income. Transfer income को हम दोनों में नहीं include करते हैं. Reason है payments for which no productive services are concurrently provided in exchange. अब आएगा आगे समझ में कि ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐसी सर्विसेज क्यों बोला जाता है जिसके अगेंस्ट कोई पेमेंट नहीं मिला है. मींस फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. सिंपल एग्जांपल अगर मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मानो तो हियर टैक्स पेयर्स एंड सेकेंडली इज योर नीडीज. अब अगर आप सब्सिडीज दे रहे हैं नीडीज को, as the government budget you have already understand that the reallocation of income is done. So if tax is being paid, what is happening in this case? If tax has been paid, so ये जो टैक्स हम पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनाया जाएगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो यहाँ पे आप याद रखना वो सारे पेमेंट्स जिनके अगेंस्ट कोई सर्विस ही नहीं प्रोवाइड हुई है, वो सारे पेमेंट्स, क्या हम जो टैक्स दे रहे हैं सरकार को उसके अगेंस्ट क्या हमने या सरकार ने हमको सर्विसेज दी है क्या? दैट इज इंफ्रा बीन बिल्ड. सब्सिडीज जो हमको सरकार दे रही है क्या उसके अगेंस्ट हम सरकार को कुछ दे रहे हैं क्या? So these all payments are always related with redistribution of income and are never the part of your national as well as the domestic income. अब आगे और पढ़ोगे. Here I have given a very good example in front of you. Factor income. A teacher wage is a factor payment. Factor payment उसके employer के लिए, लेकिन as a teacher उसके लिए क्या हो जाएगी? Income would be included in gross domestic product as well as in national income as well as in the domestic income. क्यों? क्योंकि टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. एज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज तो उनको उन सर्विसेज के अगेंस्ट क्या मिल रहा है? फैक्टर पेमेंट. दे आर गिविंग, दे आर बीन रिसीविंग सैलरी फॉर व्हाट दे आर teaching to the students. So here this is a factor payment and that's why इसको हम include करेंगे domestic income में भी, national income में भी और GDP calculation में भी. Welfare payments to the poor in the is the payment not in return of service, but it is a transfer payments which has been excluded from gross domestic as well as national income as well as your domestic income. तो ये जो हम वेलफेयर पेमेंट्स दे रहे हैं उसमें आपको, जब आप वेलफेयर पेमेंट्स, एक सिंपल एग्जांपल, आज हमको सब्सिडी मिलती है. We all are getting subsidy. In which? We are getting subsidy in LPG gas, we are getting subsidy in petrol. तो जो सब्सिडी सरकार आपको इन सब पे दे रही है, क्या सरकार की तरफ से आपने कुछ सर्विस प्रोवाइड की क्या सरकार को against these subsidies? So these subsidies are also not included while calculation of your national income. Next is, here is the difference between factor income as well as the transfer income. Make sure I have highlighted that factor income is a bilateral payment. एक तरफ से सर्विस गया है और दूसरी तरफ से पेमेंट आया है. Transfer income is a unilateral payment where no service has been done and the payment is being made. So यहाँ पे आपको यही चीज याद रखनी है. Factor income हमेशा bilateral होते हैं, transfer income होती है unilateral. Now let us see the points one by one. Payment received in return of factor services, that will be factor income. 4 factor incomes मैंने previous lecture में बताए हैं. कौन कौन से हैं? That is rent, interest, profit and wages. So these are 4 factor payments and factors of production आपको पता ही है, that is land, labor, capital and entrepreneurship. Here coming to transfer income, payment received or paid without any goods and services in return. आपको मिल रहा है because you are as a citizen, so you are not doing any services for the government. Take this single example. अभी कोई गवर्नमेंट स्कीम आई ओल्ड एज पेंशन की,
तो ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट उन्हीं पर्सन को दोगी जो उसमें एलिजिबल हो। नेक्स्ट, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम है वो हम इंक्लूड करते हैं, दैट इज अ वेरी बेसिक पॉइंट। इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड in this particular case it is not included. Transfer incomes are never the part of domestic nor the part of national income. Here are some example in front of you related to transfer income as well as the factor income. Factor income, I already told you, these are all factor payments given to the factors of production, that is rent, interest, profit and wages. And here it is old age pension, gift, unemployment allowances. अगर याद हो, नरेगा के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट देती है, तो जब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट देगी तो वो ट्रांसफर पेमेंट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने काम करा के पेमेंट दिया तो वो फैक्टर इनकम होगा। You have to understand this basic logic. If you are giving work for that, you will be considered as factor income. If you are not providing any services, then too you are receiving that. That will be known as transfer income. सेकेंड, आगे हम डिफरेंसेस को पढ़ें। सो यहाँ पे इट इज अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। Basically, it is what? It is a earning concept and it is a receipt concept. You are receiving the transfer payments, you are receiving the transfer income, but factor income is a earning concept. Secondly, it is generally received by the factors of production. Already बोलता आ रहा हूँ कि 4 factors of production होते हैं, that are land, labor, as well as the capital and entrepreneurship. Coming to here is, it is generally received by the household and the government authorities. हाउसहोल्ड को कैसे मिल रहा है? इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। गवर्नमेंट को कैसे मिल रहा है? इन फॉर्म ऑफ टैक्स। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो ये टैक्स एंड सब्सिडी का फंडा है, ये आगे जाके आप एनआईटी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। सो एनआईटी को हम डिडक्ट कर लेते हैं सीधा। So here the factor, you have understood that these are your factor income as well as the transfer income. Another example, transfer payment from government. What does it includes? Old age pension, medical facilities which they are providing in the rural areas. Second, free scholarship to the students. So these all are the transfer payments. आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, there are many योजनास done by the government, और उसके अगेंस्ट अगर आपको फंड मिलता है तो वो भी क्या होगा? ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को नहीं दी है, बट एज अ सिटीजन यू आर रिसीविंग दी सर्विसेज, यू आर रिसीविंग दैट पेमेंट बिकॉज दैट आर ट्रांसफर पेमेंट्स। अब एक टिप याद रखना, आपको अगर क्वेश्चन आए सीबीएसई में, ओल्ड एज पेंशन तो आपकी ट्रांसफर पेमेंट मानी जाएगी क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड नहीं करे हैं, बट व्हाट अबाउट if the pension is received by a person जिसने पूरी अपनी जॉब करवा के फिर रिटायरमेंट लिया और उसे रिटायरमेंट पेंशन मिल रही है, तो रिटायरमेंट पेंशन होता है पार्ट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का, और रिटायरमेंट पेंशन को हम फैक्टर इनकम ही कंसीडर करते हैं, उसे हम ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं करते हैं। Here old age pensions are considered as transfer income because ये old person ने services government को नहीं दी है. He has been registered under the scheme of old age pension, but this person has already given services to the employer, and after the retirement employer is giving the pension. होता है ना, जैसे अगर कोई रिटायर होता है और उसको पेंशन आना शुरू हो जाती हैं, तो बेटा वो पेंशन उनके पीएफ फंड क्रिएटेड पहले से ही होते हैं. सो इन दिस केस these retirement pensions are considered as factor payments and these old age pensions are considered as transfer payment. Okay, so what to include and what not to include, you are able to understand. Old age pension हमको include नहीं करना है, retirement pension हमको include करना है. Thank you listeners for listening. Hope you are able to understand what the transfer payments and factor payments are related to. Just subscribe my channel and do press the bell icon for getting more updates on economics. Do like the video if you like so. Thank you listeners.